Hello everyone. Do you want to create or edit your video professionally as a YouTuber or a vlogger? I'm sure you want. So, in a Camtasia, it is quite possible because Camtasia वर्ल्ड के बहुत सारे वीडियो एक्सपर्ट्स द्वारा यूज किया गया सॉफ्टवेयर है जो कि आपको इजीली अपने वीडियोस को क्रिएट करने के लिए और आपके क्रिएटेड वीडियो को एडिट करने के लिए हेल्प करता है एंड इट इज़ क्वाइट इजी टू यूज फॉर द बिगिनर्स टू द एक्सपर्ट्स लेवल ऑफ यूजर्स. सो आज के हमारे पूरे सेक्शन में मैं आपको क्विक सारे सेटअप्स बताने वाली हूँ जिससे आप इजीली छोटे छोटे एलिमेंट्स जैसे कि एक स्लाइड्स को क्रिएट करना, जैसे कि कोई टेक्स्ट के लिए इफेक्ट देना या जैसे कि कोई बिहेवियर एनिमेशन यूज़ करना, वो आप इजीली कर पाए. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू लेट यू नो व्हाट द Camtasia इज. Camtasia is specially designed for the screen recording software. स्क्रीन रिकॉर्ड करने के लिए ये पूरा सॉफ्टवेयर बनाया गया है. तो यू कैन वेल इमेजिन कि आप इसके साथ अपने प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन डिज़ाइन कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू नीड टू गिव अ डेमो टू योर कस्टमर हाउ योर प्रोडक्ट वर्क्स, देन यू कैन easily create a quick demo for them and you can give them easily with a better explanation. This is more useful for the education industry. You can create educational videos for the students who want to learn more and more through the screen. So it is a very useful software. Of course, you can also create training videos for your co-workers. So you can easily save lots of hours to training them again and again. So it is a very useful software for each and everyone out here. So let's go ahead. So first of all, I'm going to show you how to create a quick slideshow for your product, or you can use it for your personal use also. The methodology will be same. So let's go ahead with my screen. You can see here I need to open library because I need to choose some images to make a slideshow. So here is the option. I'm going to the file, import, then going to the media, and here is already I have selected 3 files. So I'm going to Control A and open it in my library area. So now, as you can see, all my images are the gym related and I'm going to make a slideshow for the gym. So I'm just going to select this all image by, you can press the control and you can click each one of image to select all, and then you just need to drag them in your track just like this. Okay, now you can see all my images are fit in this frame. I need to run a time this slideshow. Okay, this is a quite simple without the animation. Now it is quite normal. It's, you can call it like a static, but अब हम इसको थोड़ा animation देने वाले हैं. So I am going to start with the transitions process. You can see here on the left side there is a transition process, and there are so many effects available here. Like for example, you can just mouse over on the effect and you can see what the effect will look on your image. So I'm just checking the images preview, and here I select few. One I like a fade image. I will just drag and place between the images, so when the image will change you can see that effect. One more effect, I need a flip. So that's it. Okay, now I will check the demo. Yes, you can see here my animation is working for the image. अभी ये इमेजेस है उसका टाइमिंग ज़्यादा आ रहा है, मतलब काफ़ी टाइम के लिए आपके स्क्रीन पे रह रहा है. इफ़ यू वांट टू डिक्रीज द टाइम यू जस्ट नीड टू ड्रैग लाइक दिस एंड आप इमेज को छोटा कर सकते हो. और जो इमेज अगर आपको लंबे टाइम के लिए रखना है तो आप उसको ऐसे लंबा खींच के कर सकते हो. एंड यू कैन क्रिएट एनिमेशन अकॉर्डिंग टू योर नीड्स. सो जस्ट मैं अभी इसको और छोटा कर रही हूँ. ओके, again just like this.
So just like this, you can create a quick slideshow video for your product presentation, and also you can create for your personal use too. It is quite easy and useful for everyone. You can hit the bell icon to subscribe our channel for more informational videos. Also, don't forget to like and share this video. Also, you can give me a review in the comment box below the video. Thank you.